तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लोथ्स किस तरीके से ड्रॉ करना है और उसमें शेडिंग वगैरह किस तरीके से प्रोवाइड करना है, टेक्सचर किस तरीके से देना है। तो यहाँ पे जो मैं सैंपल ले रहा हूँ वो एक हैंगिंग क्लॉथ है जो कि दीवार पे लटकी हुई है और वहाँ पे एक साइड से लाइट पड़ रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आप भी इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो, आप जो मैं बना रहा हूँ यही ड्रॉ करना चाहते हो तो ये बना सकते हो, या फिर अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कहीं भी घर पे कपड़े होंगे, आप उसको कि कहीं भी किसी भी जगह पे टांग दो, लटका दो या फिर कहीं पे रख दो, उसका पिक्चर क्लिक कर लो और उसके बाद उसको ड्रॉ करो। और ये भी देखो कि प्रॉपर लाइटिंग में है, क्योंकि लाइटनिंग में जो शैडो आती है वो भी प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। तो लाइटिंग भी देख लो कि किस तरीके से पड़ रही है, ठीक है। तो आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल इस ड्राइंग पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही हम क्लॉथ को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ड्रॉ करते टाइम। सबसे पहला कि लाइट किस तरीके से किस साइड से पड़ रही है, ठीक है। जिधर से भी लाइट पड़ेगी उस साइड में जो भी सरफेस, कपड़े का जो भी सरफेस, जो भी पार्ट एक्सपोज्ड होगा वहाँ पे हम हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो उसके बैक साइड होगा, जो कि पीछे साइड होगा, वहाँ पे हम शेडो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो कि वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही होगी तो वहाँ पे डार्क शेडो करेंगे। वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। दूसरा कि कपड़ा है, उनका कपड़े का जो नेचर होता है वो फोल्ड हो जाता है। तो एक पोर्शन जो होता है कपड़े का वो फ्रंट की साइड आ जाता है और बाकी के पोर्शन जो है पीछे चला जाता है। इसी तरीके से फोल्ड होता है, ठीक है। तो जो कि बैक साइड होगा, जो कि पीछे होगा, जो मुड़ा हुआ होगा अंदर के साइड, वहाँ पे हमें डार्क शेडिंग करनी है। और जो आगे की ओर आ रहा होगा वहाँ पे हम लाइट शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो आगे मैं डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल मैं आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें मार्क कर लूँगा कि कपड़े किस जगह से मुड़ा हुआ है, किस तरीके से जा रहा है वगैरह वगैरह मैं देख लूँगा ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशन मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसको ऑब्जर्व करके मैं आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लेता हूँ और शेडिंग के कुछ कुछ पार्ट्स भी मैं थोड़ा सा शेड कर दूंगा। सॉरी, शैडो के कुछ पार्ट्स मैं शेड कर दूंगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे शैडो पड़ रही है।
लिए इतना ही, और कुछ ज़्यादा खास नहीं था इस वीडियो में बताने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड चीज़ें मैं बता चुका हूँ अपने पुरानी वीडियोज़ में। तो आपको देखो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल और आपकी प्रैक्टिस, ये दोनों को हाई रखना है। अब हर एक चीज़ जो आप ड्रॉ करना चाहते हो आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पे काम करिए, प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, आपकी जो ड्राइंग है अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।